अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे. इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज टू व्हाट सोशियोलॉजी इज़ लाइक. सोशियोलॉजी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विच आर एनलिस्टेड बाय रॉबर्ट बिटस्टेड इन हिज बुक नेम्ड द सोशल ऑर्डर. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस एंड व्हेन वी से दिस व्हाट डू वी मीन. Sociology has now emerged into an independent science. It is not treated and studied as a branch of any other science like philosophy or political philosophy or history, as it used to be in the past before 19th century. As an independent science, sociology has its own field of study, boundary and research methodologies. तो सोशियोलॉजी बेसिकली 19th सेंचुरी से पहले इन इटसेल्फ कोई डिसिप्लिन था ही नहीं, और जितनी भी स्टडीज़ होती थी अबाउट हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस पढ़ते थे, जो फिलोसोफर्स काम करते थे, वो सब उसको जो है ना बस सोसाइटी की स्टडी कह दिया जाता था. सो सोशियोलॉजी की जो टर्म है इन इटसेल्फ वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं थी. बिफोर 19th सेंचुरी सोशियोलॉजी का इन इटसेल्फ कोई डिसिप्लिन होने का कॉन्सेप्ट नहीं था. आफ्टर 19th सेंचुरी इट केम टू बी नोन दैट व्हेन ऑगस्ट कॉम्टे कॉइन्ड द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी एंड आफ्टर एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो के डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ पता चला कि सोसाइटी की जो स्टडी है, जो जितना भी हम सोसाइटी को जो एग्जामिन करते हैं, वो इन इटसेल्फ एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन है और सोशियोलॉजी फिर वजूद में आई. सोशियोलॉजी केम टू बी नोन एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विद इट्स ओन बाउंड्रीज, विद इट्स ओन research methodologies and practical approaches in order to examine the society and its values. So this is why sociology is an independent science, क्योंकि अब sociology after 19th century it was charted as a scientific discipline and it was no longer seen as a philosophical discipline. All right, फिलोसफी के डिसिप्लिन से इसको बाहर ले आए और इसको एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच दे दी गई, जिससे अब हम सोशियोलॉजी कहते हैं. सो दिस इज व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट साइंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी विच इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. नंबर 2, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस. व्हाट डज दैट मीन? Sociology belongs to the family of social sciences and not to the family of physical sciences. ठीक है, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, एक फिजिकल साइंस नहीं है. और ऐसा क्यों है? एज अ सोशल साइंस सोशियोलॉजी concentrates its attention on man, his social behavior, social activities and social life. Alright, so as a member of the family of the social sciences, sociology is intimately linked with history, political science, economics, psychology, anthropology, etc. Means that sociology basically एक सोशल साइंस इसी वजह से है क्योंकि ये ह्यूमंस के जितने भी सोशल इंटरेक्शन, सोशल एटिकेट, सोशल वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स, वो सब चीज़ें जो सोशल सिचुएशंस या सोशल सेटिंग्स में इंसान के इर्द गिर्द में हो रही होती हैं, और जितने भी सोशल इंटरेक्शंस का हिस्सा इंसान बनता है, उन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली और इंटीमेटली जो है एग्जामिन करने का नाम सोशियोलॉजी है. तो सोशियोलॉजी बेसिकली इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द सोशल साइंसेज. इट इज़ नॉट अ फिजिकल साइंस. ठीक है, ये कोई फिजिकलिटी पर इसका फोकस नहीं है. इसका फोकस सारी जितनी भी सोशल सेटिंग्स हैं, जितनी भी सोशल सिचुएशंस हैं, उन पर सोशियोलॉजी का फोकस है. सो दिस इज व्हाई इट इज नॉट अ फिजिकल साइंस. सोशियोलॉजी इज अ सोशल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी, which is that sociology is a categorical and not a normative discipline. What do we mean by that? Sociology confines itself to statements about what is, not what should be or ought to be. As a science, sociology is necessarily silent about questions of value. It does not make any kind of value judgments. Its approach is neither moral nor immoral but amoral. So basically, sociology is ethically neutral. सोशियोलॉजी आपकी सोसाइटी में जो कुछ भी जिस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से इट विल क्लोजली इंस्पेक्ट एंड प्रेजेंट द सोशल फिनोमेना और द सोशल फैक्ट्स एग्जैक्टली द वे दैट इट इज़ हैपनिंग. अब बहुत सारे रस्म व रिवाज, बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में कुछ रस्म व रिवाज इस तरीके से होते हैं जो कि एथिकली बहुत हर देखने वाले को बुरे लग रहे होते हैं, अनएक्सेप्टेबल लग रहे होते हैं. ऑलराइट,
फॉर इंस्टेंस चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है बहुत सारे विलेजेस में, डाउरी का कॉन्सेप्ट हो गया सपोज, या फिर देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट इन रूरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे जो है ना ख़वातीन की जो है वो शादी कुरान पाक से करवा दी जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी जो सिंस इट इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यहाँ पर ये हो रहा होता है कि वो हक बख्शवाने के लिए कि जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए जो है ना वो दे टेल द फीमेल्स, द अनमैरिड फीमेल्स के आपकी शादी कुरान पाक से करवा दी गई है। सो इस तरह के बहुत सारे छोटे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब उसको आप क्लोजली इंस्पेक्ट करते हो, क्लोजली एग्जामिन करते हो, तो आपको पता चलता है कि सोशियोलॉजी जो है बेसिकली फैक्ट्स को बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट करती है, सिचुएशंस को बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट करती है जिस तरीके से वो सोसाइटी में हो रहे होते हैं। सो सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली अ कैटेगोरिकल डिसिप्लिन, नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एग्जैक्टली द वे दैट दे आर हैपनिंग। सोशियोलॉजी इस तरह से चीज़ों को नहीं दिखाती कि ऐसा होना नहीं चाहिए या ऐसा होना चाहिए। सोशियोलॉजी इज़ नॉट गिविंग सजेशंस अबाउट एन ऑन गोइंग सिचुएशन कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ एथिकली एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। सोशियोलॉजी इज़ जस्ट अबाउट प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एग्जैक्टली द वे दैट दे आर हैपनिंग। ऑलराइट, ये इसमें कोई भी चीज़ सोशियोलॉजी जो है वो एथिकली न्यूट्रल है, ए मॉरल है, इमोरल और मॉरल को फोकस नहीं करती है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ एथिकली न्यूट्रल। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में व्हेन यू गिव योर एनालिसिस, तो बहुत सारी सिचुएशंस में यू आर आइदर सपोर्टिंग एनी सोशल इवेंट और यू आर अगेंस्ट एनी सोशल इवेंट। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी चीज़ के अगेंस्ट भी नहीं होते और किसी चीज़ के सपोर्ट में भी नहीं होते, वो बस उस चीज़ को उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जिस तरीके से वो चीज़ सोसाइटी में चल रही है। ठीक है, अब जैसे चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, तो हम एज अ सोशियोलॉजिस्ट एकदम से ये नहीं कहेंगे कि चाइल्ड मैरिज इज़ समथिंग रियली इमोरल और एथिकली अनएक्सेप्टेबल, ये वो हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि चाइल्ड मैरिज जो है हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बस जो है ना उसको सोशल सिचुएशन को प्रेजेंट कर देंगे कि ऐसा ऐसा है, चाइल्ड मैरिज एक फिनोमेना है, ये होता है। और ये अब तक के जैसे फॉर इंस्टेंस कितने विलेजेस में यहाँ इतने विलेजेस में इतने टाइम्स पे दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप किसी भी सोशल सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहे होते हो कि ये फिनोमेना है, ऐसी सिचुएशन है और ये इतनी दफ़ा हुई है और इतनी बच्चियों के साथ ये चाइल्ड मैरिज का सीन हुआ है। तो ये सारा कुछ जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू पूरी रिपोर्टिंग करते हो, देन यू आर प्रूविंग योरसेल्फ टू बी अ सोशियोलॉजिस्ट। और इसी वजह से सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सिर्फ एक होती हुई सिचुएशन को दिखा दिया, आपने ये नहीं कहा कि चाइल्ड मैरिज गलत है, नहीं होनी चाहिए। वो फिर आगे के काम हैं, वो फिर जितने भी लॉ गिवर्स हैं या जितने भी आपके गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं एंड अदर्स हु आर लिंक्ड विद सच सिनेरियोज, ये उनका काम है कि वो इंसाफ जो है ना जस्टिस प्रोवाइड करें या इस सिचुएशन को क्लोजली इंस्पेक्ट करके वैल्यूएट करें या जो भी आगे करना है, एथिकली उसको इमोरल का खिताब दें या मॉरल करार दें। दिस इज़ अप टू देम। ठीक है, एज अ सोशियोलॉजिस्ट it is your duty to only present the situation the way it is happening. So this was the third characteristic of sociology. Now let's discuss the fourth characteristic of the nature of sociology. Sociology is relatively an abstract science and not a concrete science. What do we mean by abstract? First of all, let's discuss this. Abstract concepts basically refer to all of those things, all of those emotions, all of those feelings, or any such concept which is not perceivable, which is not measurable by your five senses. For instance, love, anger, hatred, freedom, power, envy, jealousy, and all of those concepts or emotions that are not touchable, or all of those things, all of those feelings, all of those concepts that do not have any physical appearance or physical existence, such things are basically your abstract concepts. And on the other hand, concrete objects are a total opposite of abstract objects. Concrete concepts are those
things around you that are tangible, that have a physical existence, that can be felt by your five senses. So when we say that sociology is relatively an abstract science, we are basically saying that it is interested in the form of human events and their patterns. It is not interested, sociology is not interested in concrete manifestations of human events. So it basically focuses only on the form and pattern of human events as to when, how, and what type of human social events are occurring around the globe. So this is your fourth characteristic of sociology. Now, the fifth characteristic of the nature of sociology is that sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. Sociology tries to find out the general laws or principles about human interaction and association, about nature, form, content, and structure of human groups and societies. It does not study each and every event that takes place in society. It is not possible also. It tries to make generalizations on the basis of the study of some selected events. This is why sociology is a generalizing event. For example, if there is a concept of marriage, if for instance sociology is focusing on the concept of marriage, then the phenomena of marriage would not be studied with respect to any single or particular individual, or with respect to a single particular couple in the society. The phenomenon of marriage would be studied, examined, and talked about on a very generalized and macro or overall level. So a specific individual or a very subjective experience is not a part of sociology. So sociology is a generalizing science, and it is not a particularized or individualizing science, because it examines the human events that are occurring all across the globe, and those events that are occurring with all the people of the world. For example, the phenomenon of social classes, power, liberty, freedom, women rights, marriages, divorce. These social phenomena and the problems that are linked with such social phenomena are discussed and examined and solved on a very macro and generalized overall level. They are not just talked about on a very particular specified scale, that like for example X and Y. Let's say that this is a couple, they got married and then they got a divorce, right? So sociology would not only focus on this couple X and Y, it would be focusing on a lot of couples in the overall society that got married and then they got divorced. So sociology is basically going to be focusing on the form and pattern and the reasons that as to why people get married and how they get married, what are the patterns of marriage and what are the patterns of divorce, and what are the reasons that promote such social phenomena, and why some social connections fail. For example, why do marriages fail? So these social phenomena are discussed on a very broad and general perspective. It is not discussed on a particularized or individualized manner. Okay, so coming to the sixth characteristic of sociology, sociology is said to be a general science and not a special social science. What do we mean by general science? Sociology basically includes all of your other social sciences as well, like political science, history, economics. However, these subjects like political science, history, economics, they actually exist as completely separate disciplines. People often do their bachelor's only in history. Some people do their bachelor's only in political science. Some people do it in economics. But when you are studying sociology, sociology is a discipline. It covers all of the human interactions and all of the forums, all of the platforms where human interaction is occurring. So, for instance, if political science, let's look at political science. This also includes your human interaction. History also includes human interaction and human social events. Economics also is that discipline which is occurring between the humans. Of course, humans are exchanging money for goods and services. So such social phenomena, all the social phenomena that are including human interactions, may it be political science, may it be history, may it be economics,
all the courses that involve human interaction, social interactions, are a part of sociology. This is why sociology is a general science and not a special social science. Like political science is a special social science, history is a special social science, but sociology is not a special social science. It is a general social science, all right? Okay, so coming to the seventh and final characteristic of the nature of sociology, sociology is both a rational and an empirical science. Now, what do we mean by rational science and empirical science? Look, there are two broad ways of approaching scientific knowledge. One is known as empiricism. What is empiricism? Empiricism is the approach that emphasizes experience and the facts that result from observation and experimentation. The other way to approach scientific knowledge is rationalism. What is rationalism? Rationalism stresses reason and the theories that result from logical inferences. So let's go deeper. Empiricists collect facts, alright, and the rationalist people actually coordinate and arrange those facts which are collected by empiricists, right? Now, theories and facts are required in the construction of knowledge. We all know that without theories, without facts, any knowledgeable production cannot be called knowledge. It's just information. Without theories, any set of data is merely information. But when theories and facts are included in any informational body, then that is actually known as knowledge. All right. तो नॉलेज में जब तक किसी भी डाटा के अंदर जब तक थ्योरीज और फैक्ट्स नहीं होते हैं तब तक वो नॉलेज नहीं कहलाया जा सकता. तो इसी वजह से सोशियोलॉजी के अंदर देयर आर थ्योरीज, ठीक है, उसमें फैक्ट्स हैं. दिस इज व्हाई सोशियोलॉजी इज एन एम्पेरिकल साइंस एज वेल एंड इट इज़ अ रैशनल साइंस एज वेल. एम्पेरिसिस्ट जो है ना वो सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, और रैशनलिस्ट उन सारे फैक्ट्स को एक अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अरेंज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटिफाई करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपकी थ्योरीज प्रिपेयर होती हैं. सो व्हेन थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड इन दिस वे, दिस इज बेसिकली नोन एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी both rationalism and empiricism are significant. A theory unsubstantiated by hard solid facts is nothing more than an opinion. ठीक है, जब भी किसी भी सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर प्रॉपर थ्योरी नहीं होगी, प्रॉपर फैक्ट्स नहीं होंगे, रिसर्च्ड नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, उसे हम नॉलेज नहीं कह सकते हैं. ठीक है, facts by themselves in their isolated character are meaningless and useless. So of course, if for instance, if an empiricist collects facts and a rationalist does not categorize and classify and coordinate those facts, then of course what is the use of those facts? तो तब तक वो facts भी जो है वो they will be useless, they would be of no good use. So until and unless you arrange the facts, you study the facts, you scrutify, examine them, classify them, coordinate them, and arrange them into a very knowledgeable production, till then those facts are also useless. So it is clear from above that sociology is an independent, social, categorical, pure, abstract, generalizing, rational and empirical plus general social science. Okay, so this was all about today's video. Here we discussed the 7 aspects of sociology's nature. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. Also share your feedback in the comment section below. Thank you so much.